Hello my dear children, good morning. Today we are continue our exercise subtraction word problems. So all of you take out your maths book and notebook. Write date. Today's date 10/7/21. C. Now open your book, page number 112. There were 2560 workers in a factory. एक फैक्ट्री में टोटल 2560 वर्कर्स काम कर रहे थे. ड्यू टू स्ट्राइक 1278 वर्कर्स डिड नॉट अटेंड वर्क. स्ट्राइक की वजह से 1278 वर्कर्स काम पे नहीं आए. हाउ मैनी वर्कर्स अटेंड वर्क. तो कितने वर्कर्स काम पे आए होंगे. तो हम टोटल वर्कर्स में से जो वर्कर्स काम पे नहीं आए उसको माइनस करेंगे. जो आंसर मिलेगा वो वर्कर्स काम पे आए होंगे. लेट्स राइट आंसर. राइट इन फर्स्ट लाइन. In a factory, total number of, write in second line, total number of workers is equal to 2560. Right here 2560. Okay, now second line minus number of workers did not attend work. Number of workers did not attend work is equal to, how many workers did not attend work? 1278. 1278. Now let's subtract. First ones 0 minus 8. Children, 0 minus 8, we cannot subtract 8 from 0. So we will borrow from next number. So 6 become 5 and 0 become 10. Now 10 minus 8 is equal to 2. Next 5 minus 7. Again we cannot subtract 7 from 5. So we will borrow from next digit 100. So 5 become 4 and this 5 become 15. Now 15 minus 7 is equal to 8. Now 4 minus 2, 2. 2 minus 1, 1. 1282. Write in this line number of workers attended work. टोटल इतने वर्कर्स थे, उसमें से स्ट्राइक की वजह से इतने वर्कर्स काम पे नहीं आए.
तो कितने वर्कर्स काम पे आए? 1282. नाउ नेक्स्ट डी. 8,375 students appeared for the university examination. एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में टोटल 8,375 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया. 7,729 स्टूडेंट्स पास्ड. उसमें से 8,375 में से 7,729 स्टूडेंट्स पास हो गए. हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. तो कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में फेल हुए होंगे? तो जो टोटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जाम दिया उसमें से जो पास हो गए वो हम माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा कि कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए. लेट्स राइट आंसर. Total number of students appeared exam is equal to 8,375 minus number of students passed. Number of students passed is equal to how many students passed in examination? 7,729. Now let's subtract. First ones, 5 minus 9. We cannot subtract 9 from 5. So we will borrow from next digit number. So 7 becomes 6 and 5 become 15. Now 15 minus 9 is equal to 6. 6 minus 2 is equal to 4. 3 minus 7 is, we cannot subtract 7 from 3. So we will borrow from next number. So 8 becomes 7 and 3 become 13. Now 13 minus 7 is equal to 6. 7 minus 7 is equal to 0. How many students failed in the examination? 646. Right statement. Write in this line. Number of students failed. 646. Now next E. In a company, 7,890 bottles of juice were made. एक कंपनी ने 7,890 बॉटल जूस की बॉटल बनाई. इन द फर्स्ट वीक दे सोल्ड 2,362 बॉटल्स. फर्स्ट वीक में उन्होंने 2,362 बॉटल्स बेची. एंड इन द सेकंड वीक दे सोल्ड 2,500 बॉटल्स. और सेकंड वीक में उन्होंने 2,500 जूस की बोतल बेची.
क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉटल्स वेर लेफ्ट इन द कंपनी। तो अब कंपनी में टोटल कितनी बोटल्स बची होगी। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जितनी टोटल बॉटल्स बनाई है जूस की, उसमें से हम पहले फर्स्ट वीक में बेची वो माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड वीक में जो बॉटल्स बेची है वो माइनस करेंगे। तो हमें आंसर मिलेगा कि कंपनी में कितनी बॉटल्स बची होगी। स्टेप 1, स्टेप 1, in a company total number of bottles total number of bottles of juice were made is equal to 7,890 minus number of bottles sold in the first week. Number of bottles sold in the first week is equal to how many bottles sold in first week? 2,362. 2,362. Let's subtract 0 minus 2. We cannot subtract 2 from 0. So we will borrow from next digit number. 9 become 8 and 0 become 10. 10 minus 2 is equal to 8. 8 minus 6 is equal to 2. 8 minus 3 is equal to 5. And 7 minus 2 is equal to 5. Write statement in this line. Number of bottles were left in the first week. 5,528. Now step 2. Step 2. Number of bottles were left in the first week. Number of bottles were left in the first week is equal to 5,528. 5,528 minus number of bottles sold in the second week. Number of bottles
sold in the second week is equal to how many bottles sold in second week? 2500. Now let's subtract 8 minus 0, 8, 2 minus 0, 2, 5 minus 5, 0, and 5 minus 2, 3. 3028. So number of bottles were left in the company. Right statement. Number of bottles were left in the company is equal to 3028. Understood everybody? Okay. Write very carefully, okay? Bye.